today's topic is television studio structure and functioning. And we are sitting in the studio of Gyan Darshan, that is the functional satellite television educational channel. And we will show you all the, components, all the functioning of television studio from this studio only. And for today's session, we have two experts. First, I welcome Miss Ashuni. She is a producer in Electronic Media Production Center, EGNOU. So first, we will start with the structure and functioning of television studio. And I invite Ashuni. Ashuni, you have, a lot of experience in working in a satellite television channel. And I request you to explain the, structure and all the functioning of a television studio for our learners. Sure. Thank you so much. Yeah, so as we all know that television studio production is a high-end, a professional broadcast studio. So in this kind of a studio, a professional kind of a studio, generally the studio is divided into two parts, two components. And where we are sitting currently is the studio floor or the recording floor. So the other component of the studio is called the PCR or the production control room, where all the crew members and the production staff, they sit there. And so today I will begin with explaining to you the studio floor. And as you can see where we are seated. So this is the physical set of this studio. As you can see, physical set, we have real set like behind us. So this is designed by our set design and placed here. And this is the set where we have teleconferencing every day. So this is the physical set that you can see, and it is being shown to you through our top angle camera, which is placed on top on the ceiling. And as you can see, the camera will go up and you will be able to see the various lights. Lighting is a very important component of a television production. So these lights are placed on the ceiling, and it is also movable, depending on the need of the production. The lights can be moved up and down, side to side. Its intensity of brightness, it can also be manipulated from the PCR room. Later we will show to you also the light control panel. So various lights are set up on the ceiling of the studio. And so this is a very important component of studio. As you know, that video and photography, it all is all about writing with lights. So lighting is a very important component in a studio like this. You can also see a part of the blue screen, right? So as our remote camera is scrolling down, you can see that this is the virtual set. So what is a virtual set? And through this set, we're able to transport our audience, our learners to different places around the world or wherever the subject is required to be. So this, we use a technique called the chroma key, and in other studios they may also have a green screen. So by eliminating either the blue or the green screen, for example, when you see a weather report or traffic report, or you're also able to see the live coverage from behind the screen, behind the anchor. So all these are done through this virtual set or using the chroma key. See, as you see the walls of the studio, this is made to be soundproof, the acoustic of the studio, so that no leakage of sound from anywhere comes into the studio. And it is also light proof, so that only the light which is originated from the studio, so that we will be able to manipulate or arrange the set according to the need of the production. And as you scroll down, you see our cameras and our cameraman standing behind the cameras. In this particular studio, we have 3 HD cameras, high definition cameras. And as you can see, all our camera persons, they are wearing the headphone. So they are able to receive the instruction from the PCR room, whether to move the camera in, zoom out, dolly in, dolly out. So they're able to do all that by listening to the instructions given from the PCR room
And they also have a talkback in case they need to tell something to the crew sitting in the PCR room. So basically, this is the structure of the studio in most cases. You have two different sets or multiple sets, and you have a number of cameras. It can be one for a small production, or it can be multiple. So in our case, we have 3 plus 1 on top, but they can have many more. Thank you, Ashwini. Since our program is for our Hindi learners also, and this topic, television studio structure and functioning, it's a part of our MA in journalism and mass communication, our PG diploma in electronic media, and our MA in journalism and electronic media students. I just want to, मैं केवल संक्षेप में जो अश्विनी ने बताया कि स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, जहाँ जो रिकॉर्डिंग एरिया है उसके बारे में बिल्कुल संक्षेप में बता दूं कि हमने अश्विनी ने चर्चा की फिजिकल स्टूडियो की और वर्चुअल स्टूडियो की भी। वर्चुअल स्टूडियो में आपने देखा कि पीछे ब्लू नीले कलर का कर्टेन लगा हुआ है और नीचे भी ये कहीं पे हरा भी यूज़ होता है, कहीं पे नीला भी यूज़ होता है, और क्रोमा की तकनीक की मदद से आप बैकग्राउंड चेंज कर पाते हैं इसका, और आप बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाहें वर्चुअली वो लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अश्विनी ने बड़े विस्तार से आपको जो लाइटिंग सेटअप है स्टूडियो के छत पे सीलिंग पे जो माउंटेड है उसके बारे में बताया, साथ ही बताया कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का डायरेक्शन, ये सब कुछ पीसीआर से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। साथ ही अश्विनी ने आपको बताया कि जो स्टूडियो की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो बिल्कुल ही साउंड प्रूफ होती हैं, यानी बाहर की कोई भी ध्वनि, कोई भी नॉइज़, कोई भी शोर स्टूडियो के अंदर नहीं आए, और साथ ही लाइट का भी लीकेज नहीं होना चाहिए कि बाहर केवल जो स्टूडियो में लाइट है वही लाइट वहाँ पे आए, बाहर से लाइट और ध्वनि दोनों का लीकेज नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ें बताई। तो और साथ ही आपने देखा कि हमारे 3 कैमरेज हैं जो पेडेस्टल पे लगे हुए हैं, हमारे कैमरा पर्सन्स भी हैं, और वो सब टॉकबैक के मदद से पीसीआर से, जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, उससे वो जुड़े रहते हैं। और जैसा कि अश्विनी ने बताया कि अब ये स्टूडियो का एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी टेलीविज़न स्टूडियो का, और ये चीज़ें टेलीविज़न स्टूडियो में होती हैं। इसके बाद अश्विनी, अब मुझे लगता है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स द पीसीआर, द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टूडियो। Sure. So now let's talk about the PCR, production control room. As you can see, one of our camera is now focusing on the production control room. This is the screen through which the studio and the PCR can see each other. So PCR as such is the heart of production, and especially online editing is happening at the time that the broadcast is happening. So whether you're doing a live show or whether you are doing a pre-recorded recording, so online editing happens at the PCR. As you can also see in the photo that we have displayed, there are a number of crew members sitting there, technical people, production people who are involved in such a production. We have the producer, or in our case we call the producer, or in some studios they may call it the director, who takes the final call. As you can see on the right hand side of the picture, there are many visual inputs that are coming. 3 camera input from the studio, and also if we have any pre-recorded footage that you have for the show, then it will also show on that video monitor wall. So various inputs are coming, so the director, producer sitting there will make the decision which camera or which visual input they have to take next. So as per the direction of the producer, the person who is sitting in the switcher or the vision mixer will be able to cut or crossfade into that visual that is needed. There are various components in the PCR. For example, we have the video control or the CCU, camera control unit. So as you are aware, the camera of the studio-based camera are very different from the outdoor shooting cameras, right? So the camera studio is also linked to this video control or the CCU, as it is also called, and then the person sitting in the PCR is able to make color correction
or make the camera aperture, the light come in more or less, for example. And since there are multiple cameras, they're able to control and make it look like one whole unit, right? So that is the role of the video control, or the CCU, as we call it, camera control unit. So color correction is done, then also setting of aperture for the camera, and all these things are handled through this equipment. Then we have what we call vision mixer, or the switcher. So this is a very important element of production, especially online production. Through this instrument, or through this machine, we're able to change shots from one video to another video input. So for example, you want to take camera 3 and then switch to camera 2. So then the producer gives the instruction, then the vision mixer, the switcher who is sitting there, will be able to switch to that camera as per the instruction. So this vision mixer has a lot of features. It's not just to cut from one camera to the other, but it can do many other features as well. Like it's able to put two pictures together. We call it picture in picture. So we're able to do different kinds of things through this switcher. So you're able to even superimpose, for example, graphics or names or text. So through this machine, we're able to do all that thing. And besides just cutting from camera to camera. So here is a closer look at that thing. You will see that there's a lever. So that one is used to fade in, fade out, cross fade, and all those things. So each of this item, Dr. Amit, you would require, elaborate understanding, but this is just an overview of how the vision mixer works. बिल्कुल आशुनी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पीसीआर के अभी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें इन्होंने एक जो वीडियो कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल यूनिट सीसीयू के बारे में बताया है कि स्टूडियो कैमरा नॉर्मल कैमकॉर्डर या ईएनजी का जो कैमरा होता है उससे अलग होता है। एक पूरी यूनिट होती है पीसीआर में जो कि स्टूडियो में जो कैमरे हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं। वो चाहे अपर्चर हो या बाकी बहुत सारी सेटिंग्स हो, वो हम वहाँ से कर सकते हैं। और रोबोटिक कैमरों का भी युग है जहाँ पे कैमरा पर्सन्स स्टूडियो फ्लोर पे नहीं होते और कंप्लीट जो कई कैमरे होते हैं वो सीसीयू से ही उनकी पैनिंग, टिल्टिंग, सब कुछ सारी चीज़ें वहीं से वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आशुनी, जो आपने बताया कि विजन मिक्सर की बात जो आपने बताई, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आपने देखा कि आशुनी जी ने बताया कि 3 कैमरे हैं, तीनों का अलग अलग इनपुट मिलता है, नंबर 1। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जैसे रिकॉर्डेड मटेरियल भी है, उसका एक इनपुट होता है, फिर जो ग्राफिक्स है उसका इनपुट होता है। ये सारे इनपुट्स कब कौन सी चीज़ें ली जाएंगी, किस कैमरे का इनपुट लिया जाएगा फाइनल मास्टर शॉट में, कब रिकॉर्डेड मटेरियल जाएगा, ये सारी चीज़ें जैसा कि आशुनी ने बताया कि इस केस में ज्ञान दर्शन के केस में प्रोड्यूसर या न्यूज़ चैनल्स के केस में भी प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन बाकी कई केसेस में उन्हीं को हम डायरेक्टर भी बोलते हैं। यानी फाइनली जो कंटेंट को जो फाइनलाइज करता है, वो जो फाइनल से जिसका होता है, तो वो पीसीआर में बैठ के तय करते हैं या करती हैं कि फाइनल क्या जाएगा। तो विजन मिक्सर भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है स्टूडियो का, टेलीविज़न स्टूडियो का, जो कि पीसीआर में होता है। इसके आगे और क्या चीज़ें हैं आशिनी, आप जैसे लाइटिंग कंट्रोल यूनिट है या वीटीआर है या बाकी और चीज़ों के बारे में आप? Sure. So the next component is the lighting control panel. So this is also controlled from the PCR room. So the lights that you saw in the studio, it is all managed and controlled from the PCR room. So whether to decrease, to increase, or to bring it down or take it up, all these are managed through this light control panel. As you know that lighting is a very important component of any television production. So this is handled by professionals, trained professionals, and they are able to manage all the lights. So all these lights that you see in the studio are linked to that light panel in the PCR.
बिल्कुल, जैसा आपने अभी जब हम स्टूडियो देख रहे थे तो आपने देखा था कि सीलिंग पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी और इन सारी लाइट्स को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना वो लाइटिंग कंट्रोल पैनल के थ्रू होता है। आप इसको मूव कर सकते हैं, उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइटिंग में जो आप देखते हैं कि ये पूरा लाइटिंग का जाल है और ये संभव नहीं है कि किसी आम व्यक्ति के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए पूरी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न प्रोडक्शन या किसी भी तरह के ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में लाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे में लाइट्स को कंट्रोल करना प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लाइटिंग कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है और वहाँ एक प्रोफेशनल होते हैं जो उसको हैंडल करते हैं। Sure. Yeah, that's right. आशुनी, आगे और क्या चीज़ें हैं? Yeah, so just to add to the point that you have made about lighting, no, lighting is not just for luminance, but it is for creating tone, emotion. So like if you want to create a dramatic effect, you use the light to create that drama. Like for example, you want to create a day scene or an early morning scene, it can all be done by manipulating light. So that is the importance of light in production. बिल्कुल, मतलब Yeah. लाइट कहानी में भी लाइट का योगदान होता है। लाइट केवल कैरेक्टर्स को इल्यूमिनेट या प्रकाशित कर देने तक उसकी भूमिका नहीं होती, कहानी में उसका योगदान होता है। एक खास वही कैरेक्टर हम ही दोनों बैठे हैं और एक खास तरह की लाइटिंग हो तो एक डर और हॉरर का सेंस और मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है। तो आप देखें कि लाइट का बड़ा योगदान होता है पूरी स्टोरी टेलिंग में। पूरी स्टोरी टेलिंग में हम लाइट का बहुत यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। So now we will move on to another very important component, and that is in the PCR. We have what is called the VTR room or the video tape recording room. So in our studio, we call it the VTR room, and here all the pre-recorded footage are played from this VTR. Let me also show you another picture. See, here is a person who is managing this VTR room. So all the footage which needs to run in that particular program is given, and then using multiple players. As you can see, we have multiple players in our VTR room. He or she will be able to play back as per the need of the program. And also the program which is going live is also getting recorded in this VTR room, so that for future we can always reuse it in the future as well. And the next important aspect of the PCR is the sound control room. So all the sound inputs are controlled in this room, whether it is microphone, whether it is music, or whether it is coming from, and let's say an outdoor, if it is a news reporter staying outdoor in the field, all the inputs, audio inputs are controlled by this in the audio control room. And if you see a close-up, a little closer look at the audio control room, you see that we have a monitor as well in that room, so that the person who is handling the audio is able to see and also hear at the same time. So if you have a closer look, see there are a lot of faders. So each microphone that is being used will be put up, and then as soon as that microphone is no longer needed, it has to be pulled down so that no noise goes in the production. So the person who is sitting here has to be very alert with all these things. So that is the audio control room. Yeah, and one more aspect of production is the graphics. So we have graphics, whatever need that we, not just the name, the super that you saw in the beginning of the program where the title of the program is displayed, it is made through the graphics. And then so a person beforehand, the graphic artist will come and lay out everything which is needed for the production. So graphics is designed before the production happen, and as the production happen, as and when it is needed, it will be taken. बिल्कुल। तो आशुनी, आपने कई चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि VTR के बारे में बताया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि VTR का स्लाइड आप वो कर दें। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि स्टूडियो कैमरे और कैमकॉर्डर में फ़र्क होता है।
जो ENG में हम यूज़ करते हैं वो कैमकॉर्डर होता है, उसकी टेप या जो भी उसका रिकॉर्डिंग यूनिट हो, अब हार्ड डिस्क यूज़ होता है, तो आप वो कैमरे का ही पार्ट होता है। लेकिन स्टूडियो कैमरे में जो रिकॉर्डिंग यूनिट होता है वो कैमरे का पार्ट नहीं होता, वो VTR में होता है, नंबर 1। तो वो केबल के थ्रू जो स्टूडियो के कैमरे होते हैं वो VTR से कनेक्ट होते हैं, और जो भी यहाँ शूट हो रहा है वो VTR तक पहुँचता है और वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसके अतिरिक्त PCR में जो विज़न मिक्सर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। उन इनपुट्स में जो एक्टिव कैमरे हैं उनका इनपुट होता है, प्लस जो रिकॉर्डेड मटेरियल होता है वो VTR से कनेक्ट होता है, और जब उसको प्ले करना होता है तो हम VTR से प्ले करते हैं, और विज़न मिक्सर के थ्रू उसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जाएगी। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट, चूँकि टेलीविज़न प्रोडक्शन भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो विजुअल के साथ साथ ऑडियो भी बहुत महत्व रखता है। जैसे अभी मैं और आशुनी बैठे हैं तो 2 माइक्रोफोन काम कर रहे हैं। इन दोनों माइक्रोफोन का इनपुट जो साउंड कंट्रोल यूनिट है उसके पास होता है, और वो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, चला सकते हैं, फेड आउट कर सकते हैं, फेड इन कर सकते हैं। तो जो ध्वनि का सारा नियंत्रण होता है वो ध्वनि नियंत्रण कक्ष में होता है, और वहाँ एक प्रोफेशनल पेशेवर व्यक्ति बैठते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हो गई जो मुझे लगता है कि टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में कई सारी चीज़ें हमने, कई कंपोनेंट, स्टूडियो फ्लोर और जो रिकॉर्डिंग एरिया है उसके बारे में, PCR के जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ और चीज़ें हैं तो संक्षेप में आप, I will request you to just tell about in brief. Sure. So production is, before coming to the studio, now we have what is called a pre-production stage. So a lot of things happen before coming to the studio. So we do the scripting, for example, all discussion, we have crew meeting, and then we have meeting with the expert and all that thing. And also, we have what is called the post-production as well. We have editing and so on. So, but at this, since we are talking about studio production, one very important aspect is also the makeup, right? So makeup is considered to be very important. And just outside our studio, we have what is the makeup room. And so some people, like for example, some people who are teachers, let's say, and who are not professional anchors, sometimes resist, like putting makeup. But we say that it is very important because, as we are already aware, we have a lot of light in the studio. And so each, if even if we have a little bit of sweat on our face, the light reflects it. So in that way, we're able to bring down that reflection by putting a little bit of, let's say, powder. No, so that is the importance of makeup. So that is also, we emphasize that if at all possible, we must do some makeup, not just for style's sake, but also to enhance the production value in terms of light reflection or in terms of highlighting, and all these things. So that is another aspect that we do in studio recording. Yeah. Thank you, Ashini. You have, explained almost all the components of a television studio in brief, and you explained the functioning of these components also, and how these components are important for television production. So this was the structure and functioning of a television studio, and you have seen all the examples and photographs of a functional satellite television educational channel, that is the Gyan Darshan, and that is the part of IGNOU. Thank you for watching. Thank you, Ashini, for joining us. Thank you.